Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to discuss about methods of training in HRM. So guys, as you can see on the screen, there are two methods of training in HRM. They are on-the-job training and off-the-job training. So various types of on-the-job training are coaching and mentoring, job rotation, refresher training, orientation training, job instruction training, apprenticeship training and cross training. And various types of off-the-job training are conference training, incident method, lectures, case study, role playing, vestibule training, programmed instructions. So in today's video, we'll understand various types of on-the-job training. And in next video, we'll understand various types of off-the-job training. So let's understand about on-the-job training. On-the-job training involves allowing the person to learn the job by doing it in real work situation. तो on-the-job training में जो real work situations होती हैं उनमें trainee को training दी जाती है. The new employee follows the orders, carries out instruction and adopts the right technique while doing this job under supervision of an experienced employee. तो जो न्यू एम्प्लॉय होता है या ट्रेनी होता है, so he follows all the orders and carries out instructions, adopts all the right technique and he works under the supervision of an experienced employee. तो on the job training में जो ट्रेनी होता है, he works under the supervision of experienced employee. This method is popularly known as learning by doing, and here the trainee is given an opportunity to handle and observe the job by being its literal part. Coaching and mentoring. Coaching is one-on-one relationship between the trainees and supervisors, which offers workers continuous guidance and feedback on how well they are handling their task. तो कोचिंग क्या होता है? एक वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है ट्रेनीज और सुपरवाइज़र के बीच में. तो जो सुपरवाइज़र होता है वो ट्रेनी को कंटिन्यूस गाइडेंस देता है और फीडबैक देता है. वो उसके वर्क को ऑब्जर्व करता है, देन ही प्रोवाइड्स द फीडबैक ऑन हाउ वेल द ट्रेनी इज हैंडलिंग द टास्क. दिस मे इंक्लूड सिंपली ऑब्जर्विंग द सुपरवाइज़र और showing steps to the new hire step by job expert. जो सुपरवाइज़र होता है वो ट्रेनी को वर्क को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है और ट्रेनी उसको ऑब्जर्व करता है. Now we'll understand what is mentoring. So mentoring is a particular form of coaching used by experienced executive to groom junior employees. Mentoring is extension of coaching for a period of several years until the individual is capable of replacing the mentor. तो मेंटरिंग एक कोचिंग का ही फॉर्म है जो एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव ग्रूम करने के लिए देते हैं जूनियर एम्प्लॉयज़ को. मेंटरिंग में क्या होता है? जो मेंटोर होता है वो एम्प्लॉय को कम्प्लीटली ग्रूम करता है. ही प्रोवाइड्स कंप्लीट गाइडेंस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. एंड मेंटरिंग इज एक्सटेंशन ऑफ कोचिंग एंड इट इज़ डन फॉर सेवरल ईयर्स. कब तक होती है? जब तक जो इंडिविजुअल है he becomes capable, he is completely efficient and he is able to replace the mentor. कोचिंग और मेंटरिंग में क्या डिफरेंस है? कोचिंग में जो सुपरवाइज़र होता है वो वर्क को सुपरवाइज करता है एंड ही गिव्स फीडबैक. लेकिन मेंटरिंग में क्या होता है? जो मेंटोर होता है वो कंप्लीट गाइडेंस देता है. ही ग्रूम्स हिज जूनियर एम्प्लॉय जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाता मेंटोर को रिप्लेस करने के लिए. जॉब रोटेशन. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस ट्रेनिंग. जॉब रोटेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस ट्रेनिंग. Job rotation is the process of training employees by rotating them through series of related tasks in a department. तो जॉब रोटेशन में क्या होता है? जो एम्प्लॉय का जॉब होता है वो रोटेट किया जाता है. एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम डिफरेंट टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो हर एक टास्क में स्किल्ड हो जाए. The trainees therefore are exposed to various coaches, point of views and task operation. तो जो ट्रेनीज होते हैं they are exposed to various coaches, various point of view and task operations. It is common for training managers and non-technical workers.
So job rotation is done for training managers and non-technical workers. It makes a manager to know different operation procedures and practices in a department. Job rotation के through जो manager है, he will understand all the operation procedures and practices in a department. Next method is refresher training. So rapid changes in technology may force the company to go in for such kind of training. तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्यों देते हैं? जब कंपनीज में रैपिड चेंज होता है तो कंपनीज अपने एम्प्लॉय को रिफ्रेशर ट्रेनिंग देती है बाय ऑर्गेनाइजिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज विच इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर फील्ड सो दैट एम्प्लॉयज में बी केप्ट अप टू डेट एंड रेडी टू फेस चैलेंजेस. तो कंपनी जो टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती रहती है अपने एम्प्लॉयज़ को सो दैट दे कैन फेस द चैलेंजेस और वो अप टू डेट रहें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से. It is conducted at regular intervals by taking the help of outside consultants who specialize in particular discipline. तो refresher training companies अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम देती हैं and it is given by outside consultants जो specialized हैं उस particular discipline में. Orientation training. Orientation or induction training try to accommodate the new employee to the organization's rules and regulations and facilities. तो orientation और induction training क्यों दी जाती है? To accommodate the new employee to the organization's rules, regulations and facilities. Next is job instruction training. Many jobs consist of sequence of steps best learned step by step. So there are many jobs in which there are sequence of steps. Thus this step-by-step training is called job instruction training. तो जो ये step-by-step training होती है उनको हम क्या कहते हैं? Job instruction training. It is the most common method where the trainee is put at work site checking whether the instruction have been well understood or not. The 4 steps followed in JIT methods are तो जो 4 स्टेप जो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में फॉलो करते हैं दे आर द ट्रेनी रिसीव्स एन ओवरव्यू ऑफ द जॉब, इट्स पर्पस एंड इट्स डिजायर्ड आउटकम्स विद अ क्लियर फोकस ऑन द रेलेवेंस ऑफ ट्रेनिंग. तो जो ट्रेनी है उसे एक ओवरव्यू दिया जाता है जॉब का, उसका पर्पस क्या है, उसके डिजायर्ड आउटकम्स क्या है. Trainer demonstrates the job to give the employee a model to copy. The trainer shows a right way to handle the job. जो trainer है वो demonstrate करता है job को और बताता है कि what is the right way to handle the job. Next, the employee is permitted to copy the trainer's way. And then he gives the permission to the employee to copy the trainer's method of performing the job. Demonstration by the trainer and practice by the trainee are repeated until the trainee masters the right way to handle the job. Trainer demonstrate the work. Trainer demonstrate करता है work को and trainee practice करता है जब तक trainee master नहीं कर लेता उस job को. And finally, the employee does the job independently without the supervision. Next method is apprenticeship training. It is used to train in some skilled trades such as electronics, mechanics, tailors, bricklayers, crafts for long time. ये जो मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रेन इन सम स्किल ट्रेड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, टेलर्स, bricklayers, crafts, etc. for a long time. Trainee works for a very small salary in exchange for a specified number of formal training hours. जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उनमें ट्रेनीज को काफ़ी कम सैलरी दी जाती है. It is a combination of on-the-job and off-the-job training. This technique provides the apprentice with instructions through theoretical and practical aspect. इस टेक्निक में जो apprentice होते हैं उनको theoretical और practical वे दोनों तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है. Cross training. Training workers to do diverse tasks or jobs than their own, which helps in facilitating flexibility and job rotation. Cross training क्यों दी जाती है? So that workers can perform diverse tasks and job and which helps in facilitating the flexibility and job rotation. So guys, in our next video we'll understand of the job training method and I hope you'll find this video helpful, and if you find it helpful then please press the like button and subscribe my channel Learning Point. You can also leave a comment about the video.
Thank you so much for watching. Bye bye.